my dear students. I am going to start with new chapter mensuration, class 6. I think so many students are confused about the mensuration. In mathematics, mensuration is defined as the study of the measurement of various 2-dimension and 3-dimension, 2D and 3D geometric shapes involving their surface areas, volumes, etc. So, our first topic in this chapter mensuration is perimeter. Dear students, do you know about the perimeter? Perimeter is the distance covered along the boundary forming a closed figure when you go round the figure once. Let me take my pen so I can mark anywhere. Perimeter again, distance covered along the boundary. See the figures. If you start from the point S, see this is the point S, in each case and move along the line segment, then you again reach the point S. देखिए S से start किया, along the boundary and S. So starting and finishing point is S, no problem. So you have made a complete round of the shapes in each case. Case A, triangular region. Case B, start from S and just go through boundary, then you have to come back at the point S, means you covered the perimeter of given figure. So same in the case C. So what is perimeter? This distance which covered by you is known as the perimeter of the closed figure. फिगर क्लोज्ड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अगर किसी ने एक फिगर ऐसे बना दिया और कहा कि perimeter फाइंड करो. No, this is the only distance, but particular word perimeter cannot be given at this stage. It is the length of the wire needed to form the figure. ऐसा आप कह सकते हो कि अगर हम जितना भी बाउंड्री कवर करते हैं, चाहे कर्व में हो, चाहे ट्राइंगल में हो, चाहे किसी भी शेप में हो, that is called the perimeter of the given figure. Let's consider the question. Question is, in this case, first is the perimeter is the distance covered along the boundary forming a closed figure. My closed figure is ABC, no problem. When you go round the figure once, suppose I would like to start from A. First I will cover the distance 40 centimeter, then B to C, how much? 10 centimeter. Again C to D 40 centimeter and D to A 10 centimeter. So how can you find out the area? Oh sorry, perimeter. Perimeter find करने के लिए आपको क्या करना है? Cover the distance. First you cover the distance AB, then distance BC, then distance CD, then distance DA. So we write here AB plus BC plus CD plus DA. AB is 40 centimeter, BC is 10 centimeter, CD also 40 and DA 10 centimeter. When you total these all four numbers, then your perimeter is how much? 100 centimeter. So question for you, आपके लिए, first you draw the figure on your classwork or homework, no problem. Then you start from A to find out the perimeter, from A to B, B to C, C to D and D to E, E to F, and complete your distance, move fast and reach up to a stop. Now stop. How much distance covered by you? This distance is called the perimeter of this given figure. Understand? Right? So another example for you. Meera went to a park 150 meter long and 80 meter wide. She took one complete round on its boundary. What is the distance covered by her? Same question जो मैंने last कराया उसी तरह का है. First distance cover from A to B 150 meter, B to C 80 and C to D again 150 and D to A how much? 80. So this figure is called rectangle, no problem. But the distance covered by Meera, that is called the distance covered by Meera is called the perimeter of this park. So perimeter is the AB, BC, CD, DA, all distance add करेंगे
तो सभी को ऐड करने पर आंसर क्या आएगा 460 मीटर, नो प्रॉब्लम। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में आपने क्या किया, फर्स्ट लेंथ के साथ ब्रेथ ऐड किया, फिर अगेन एक लेंथ आई, फिर एक ब्रेथ आई। लेंथ हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम्स, ब्रेथ ऑल्सो 2 टाइम्स, सो 2 टेक कॉमन, इट विल बी लेंथ प्लस ब्रेथ। सो अगर इस तरह लिखेंगे हम लेंथ प्लस लेंथ 2l, ब्रेथ प्लस ब्रेथ 2b, और 2 कॉमन ले लेंगे, तो फाइनली फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई l प्लस b, राइट नाउ, ओके। if you would like to find out the perimeter of a square, square की all four side equal होती हैं, suppose ये आपकी x हो जाएगी तो चारों साइड आपकी x x x हो जाएगी, इसमें मैंने 1 मीटर दिया हुआ है, ओके। सो अगर हम पेरीमीटर के लिए सभी साइड्स का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, ओके। तो इसको हम लोग फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। अगर साइड 1 मीटर है तो 4 इंटू 1 4 मीटर हो जाएगा इसका पेरीमीटर, नो प्रॉब्लम, आई थिंक इट्स क्लियर। ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी ऑल 3 साइड्स इक्वल होती हैं। इस ट्राइंगल की मैंने ईच साइड क्या दी है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो अगर हम इन तीनों साइड्स का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड्स, और अगर इस फिगर का हम पेरीमीटर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 4, आई मीन 12 सेंटीमीटर। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक एंड सब्सक्राइब चलता रहेगा, बट आप सीखते रहिए, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।